All right, welcome back to Weekend Hustlers, everybody. It's Pavlov here, and Nikita's with me too. Hey, everybody. So we're diving into a topic that's really buzzing right now. This next step in AI automation. Agentic AI. Exactly. What does agentic actually mean in the enterprise world? And how are companies really planning for it? Right. And look, right up front, it's really important we're clear about our source for this deep dive. We're working from a summary that was generated by a large language model. It's based on the 2025 UiPath Agentic AI Report. Yeah, exactly. And, while AI summaries can give you a quick overview, a starting point, Sure. we really believe that, true wisdom, empathy, that kind of deep human understanding you need in business, that comes from lived experience, right? Right. And from actually digging into thoughtfully crafted material yourself, it's not really something AI can fully capture or, optimize on its own. Couldn't agree more. So honestly, our strongest recommendation, seriously, whether you listen to all of this or not, is make some time to read the original report. Yeah. It's public domain, published by UiPath, the global software company. It's called the 2025 UiPath Agentic AI Report. Definitely worth a read. Absolutely. Think of this conversation as a guide highlighting the key bits, but the real depth, the full context, those human perspectives, that's all in the original document. Seriously, yeah. Find the time for it. Okay, so back to the report itself. It's focused on getting ready for what they're calling the Agentic Era. And it's based on a pretty solid foundation, a survey of over 250 US IT execs, big companies, over $1 billion in revenue. And qualitative interviews too, right, with senior tech leaders. Exactly. So a mix of numbers and actual voices. So our mission here really is to sort of guide you through this specific report's findings, pull out the most important bits, the nuggets about agentic AI and what it might mean for big organizations. Okay, let's jump in then. The report kicks off by saying that the whole promise of enterprise AI, especially, all the hype around Gen AI, Generative AI. it's hit a kind of inflection point, an interesting one. Yeah, it's like, okay, we've seen Gen AI do cool stuff, drafting emails, making content, doing some initial analysis, useful things. Sure. But the report really points out that as a standalone technology, particularly in the enterprise, it has limitations. Limitations how? Like what specifically? Well, for one thing, giving you truly actionable intelligence, it could summarize, it can create, sure, but actually plugging that insight directly into a business process, that's still tricky. Okay. The report also flags challenges with integrating Gen AI smoothly, with all the other applications and systems of business uses. Right, the existing stuff. Exactly. And maybe the biggest one for big companies, ensuring governance, security, and trust. That's crucial for anything enterprise-wide. So Gen AI is good for creating things, but maybe not quite ready to be the main engine driving complex business workflows from end to end. That's pretty much it. And that's where this idea of the Agentic Era comes in. Yeah. It's presented as the necessary next step. The evolute. And an evolution. Not just throwing more AI at the problem, but combining AI agents, traditional automation tech, and critically people, all working together to handle those more complex autonomous business workflows. So it's like taking AI from just being a helper on single tasks to being an actual participant, maybe even an orchestrator in processes with multiple steps. Exactly. And to really get our heads around this, the report defines some key terms. Let's start with agent. What exactly is an agent here? Good question. Okay, so the report defines agents as software robots, basically, but with new enhanced AI skills. The big difference from, say, traditional RPA bots is their ability to do complex task planning and make autonomous decisions. They're meant to work more intelligently, often behind the scenes, and importantly, they can collaborate with humans, with robots, and with other agents. So they've got a bit more smarts to figure things out and decide what to do next. Yeah, that's the core idea, that added layer of AI-driven planning and decision-making. And building on that, the report then talks about agentic workflows. Okay, so that sounds like putting those agents to work in an actual process. You got it. These are the end-to-end processes that use agents to do tasks and make decisions. And the goal is to need minimal human oversight per step within that workflow. Okay, minimal oversight per step. That's an important nuance. We'll need to circle back to the overall human role, I think. Definitely. And the last term is agentic automation. Right. Think of this as the whole system capability. Right. It's the combination of the AI, the automation tech like RPA, and the process orchestration needed to tie it all together. Got it. It's specifically aimed at automating processes that are dynamic, complex, again, with the goal of significant autonomy.
minimizing that step-by-step human intervention once it's all set up. It's the framework. Okay, makes sense. So how much of this is actually happening now? Does the report give us a snapshot of current AI and automation use in these big companies? It does. And maybe not surprisingly, IT process automation is the most common. 90% of the respondents use it. Wow, nearly everyone. Yeah. Gen AI and LLMs are also pretty widespread, 79%. And traditional machine learning is right behind it, 75%. And are they happy with what they have, the IT leaders? Generally, yeah. They seem quite satisfied. The top benefits they're seeing are increased operational efficiency and productivity. 72% reported that. That's a big one. Improved accuracy, fewer errors, that's 69%. And improved decision-making, 65%. Pretty strong benefits. Those are definitely tangible results. No wonder they're looking to invest more. Exactly. And that satisfaction seems to fuel future plans. The intent to invest more is huge. 92% say it's completely or very likely they'll increase spending on AI or related tech in the next year. 92%. Yeah. And interestingly, IT process automation, the thing they already use most, is still ranked as the top investment priority for 2025. 73% put it at the top. That is interesting. So even while looking ahead to agentic AI, they're doubling down on the foundational automation stuff. Seems like it. Building on what works. But okay, with all this adoption, what are the roadblocks, the challenges they're facing with the AI and automation they already have? Well, the report lists the usual suspects, really. Security is a big one, development complexity, integration, getting it to work with existing systems, and data quality. These are kind of the evergreen challenges in enterprise tech, aren't they? Yeah, tell me about it. And looking specifically at the current AI tech, beyond just getting it implemented, what do they see as its limitations? The number one limitation cited was lack of integration with other business apps, 61%. That echoes the implementation challenge. Keeps coming out. It does. Then there's the inability of AI tools to learn and adapt without a human stepping in. That's 49%. And the classic problem of inaccurate results or hallucinations, 31%. That integration point really stands out. Seems like getting AI to, talk nicely with everything else in the enterprise is a major pain point. Absolutely. And digging into Gen AI and LLMs specifically, the main worries are data quality. 47% cited that. IT security risk at 33%. Lack of explainability, why did it give that answer? 31%. And lack of trust, which is tied to explainability, right? That's 30%. There's a really interesting bit in the report about the human role related to that inability to learn and adapt point you mentioned. Oh, yeah. Only 21% said Gen AI currently requires too much human intervention. But almost half, 49%, said the inability to learn and adapt without human help is a problem. Huh. That really highlights attention, doesn't it? Yeah. It's like they're not necessarily drowning in managing the AI right now. Right. But they clearly want these systems to get smarter on their own, become more self-sufficient in learning and adapting. It's not about getting rid of humans, maybe, but shifting what humans do, moving from constant hand-holding to more high-level guidance. And that tees up agentic AI perfectly, right? Which Right. promises more of that autonomy. So given the issues with current AI and this desire for more adaptive systems, how interested are these leaders in moving towards agentic? Oh, the interest is sky high, according to the report. 93% are extremely or very interested in agentic AI. 93%. Wow. Okay, that's huge. Is it just talk, though, or are they actually starting to, dip their toes in? They're definitely moving beyond talk. 37% claim they're already using agentic AI in some form. Alrighty, okay. Yeah. And looking ahead to 2025 investments, almost half, 45%, are ready to put money into it next year. And about a third, 32%, plan to start investing within 6 months or even less. Whoa, so it's moving fast, from just an idea to actual budget lines for a lot of companies. It really seems to be picking up pace. Is this purely driven from within, like they see the potential, or is there outside pressure pushing them? The report suggests pressure is definitely a factor, a big one. 84% of these leaders say they feel pressured to implement next-gen AI tech like agentic AI. 84% feel pressured. Could be competitors, the board? Yeah, could be seeing competitors move, could be pressure from the board, or even internal teams saying, hey, look what this could do. Makes sense. So with all this interest and pressure, what are the big carrots? The perceived benefits making agentic AI look so good. Okay, the top 3 benefits they highlighted were improving oversight of business workflows. 58% said that. Better visibility. Increasing integration among applications, 53%. There's that integration point again. Finally fixing it, maybe. Maybe. And automating complex business workflows, 52%.
So basically, getting a better grip on processes, solving that nagging integration issue, and tackling automation jobs that were just too messy before. That sums it up pretty well. And when they asked about the specific capabilities they liked the sound of, Yeah. increased automation came top at 55%. Improved problem solving at 53%, and improved accuracy reduced errors also 53%. Okay. It just reinforces this idea that they see agentic AI as a way to push automation further, do more complex things, and do them more reliably. And get this, 90% of them say they have business processes right now that would be improved by agentic AI. 90%. That's basically everyone's seen potential applications. Huge potential impact. Massive. It seems the business case is pretty clear in their minds. Okay, so the numbers paint a strong picture. Let's pivot a bit to the actual voices, the leaders they interviewed for the qualitative part. What kind of real examples or perspectives did they share? Yeah, that had some great color. One early example came from Fiserv, the big fintech company. They've actually developed an agentic application for assigning merchant codes. Merchant codes. Yeah. Okay. How does that work with agents? Why is that a good fit? Well, Charbel Shaya from Fiserv explained it has three main agent parts. One agent researches the company, another interprets that research, and a third assigns the right merchant code based on the interpretation. Interesting, like a little team of specialized agents. Exactly. And the result was pretty impressive. It apparently cut the need for human validation in that specific process by over 99%. Whoa, over 99%. Less human checking? That's a huge efficiency gain for that task. But was it easy, like plug and play? Not quite. Shai added a big dose of reality there. He said getting that result took a lot of foundational work. Things like really careful prompt tuning, getting the data structure just right, tons of testing, building the connections to external data sources like search engines, the plumbing. Right, the hard yards. Yeah. And he expects that true agentic tech down the line will handle more of that setup stuff autonomously. But we're not quite there yet. Makes sense. Early days often mean a lot of manual groundwork. Who else did they feature? There was Andy Fanning. He's at Cigna, now runs an AI startup. He sees agentic systems as just a natural progression. He called it just another layer of extraction. Another layer of abstraction. Okay. How does he see them working? He talked about agents acting as both experts and orchestrators. Experts and orchestrators. What does that look like? So the agent has the expertise to figure out the best way to get a task done. If it can't use an API directly, maybe it intelligently decides, okay, I'll hand this specific step off to an RPA bot. So the agent uses RPA as one of its tools. Exactly. Using RPA when an API isn't available, for instance. He gave a healthcare example, an agent focused on GLP-1 drug policies. It knows the rules, makes workflow decisions, but might delegate the actual data entry part to an RPA bot if needed. That really drives home the idea of agentic automation being a mix of technologies. Definitely. What about trust? That's got to be a huge factor with systems making autonomous decisions. Oh, yeah. Fanning hit that head on. He reckons trust will build gradually. In phases. Yeah, in phases, with sort of increasing thresholds of autonomy as people get comfortable. He stressed you absolutely need mechanisms to stop unintended actions to ensure oversight. And a key quote from him was, trust will develop in phases. If an agent encounters a task it can't handle, it will delegate that task to a human. So the human is still the ultimate safety net. Knowing when to ask for help is critical for the agent. Absolutely critical. The system needs to know its limits. The report also had views from an Asian bank, didn't it? Yes, tell us about that. The head of intelligent process automation there sounded really excited. He sees agentic systems, and specifically orchestrated by RPA, handling complex stuff like document processing, data automation, workflow management. Okay. He thinks this combination is what will finally unlock the full value of their existing RPA investments. He literally said, that's when we will realize the full value from RPA. It will be like an intelligent automation suite with a generative AI brain. We'll be able to train a bot in natural language to read documents. So RPA providing the structure, Gen AI providing the brain, leading to a much smarter automation setup. That's the vision. But interestingly, not everyone at that same bank was quite so bullish on, removing humans entirely. A different perspective. Yeah, this is where that tension pops up again. A colleague of his, a process transformation manager, was more cautious. Why? She pointed out the complexity of many existing processes. Her take was, if you eliminate humans from them, you'll break a lot of things. A very pragmatic warning. Right. Sometimes that human judgment is the glue holding a messy process together. Exactly. And what about highly regulated fields?
where mistakes are costly and oversight is non-negotiable. Good point. Abhishek Mittal from Wolters Kluwer, which operates in those kinds of areas, really emphasized the ongoing need for human review. He said flat out that for regulated activities or high-value transactions, human oversight is critical. And crucially, I don't see that going away. So humans remain essential, especially where risk is high. Definitely. And one more voice, Amir Hajian from Arteria AI. They work on document workflows for banks. Okay, what's his take? He's incredibly enthusiastic. He sees agentic approaches as genuinely exciting, something that's fundamentally changing how intelligent software gets built. How so? Well, in their world of document understanding, he sees agents breaking down complex tasks into smaller, manageable parts. This improves accuracy and helps the system generalize better to documents it hasn't seen before. He was quite emphatic, saying agentic systems are going to be one of the most exciting things of our time, and how we build software and intelligent systems is changing dramatically. Wow, high praise. So putting these voices together, it sounds like massive excitement and potential, backed by some real early use cases, but also a very clear-eyed view of the challenges, the complexity, the need for human judgment, especially where things are critical or regulated. You can't just flip a switch and let the agents run wild. Not at all. And those concerns voiced in the interviews, they line up almost perfectly with the big worries identified in the wider survey about actually adopting agentic AI. Okay, so what were the top concerns from the survey respondents? Number one, IT security issues. 56% cited that. Always top of mind. Yep. Then, cost of implementation, 37%. Integration with existing systems, 35%. There it is again. It just won't go away. Never does. Regulatory compliance was also 35%. Ethical considerations, 34%. The potential for errors or hallucinations, 32%. Lack of human control over what the AI does, 28%. And interestingly, job displacement came in last among these main concerns at 23%. That is interesting. The fear of job losses, while very real in public discussion, seems less pressing for these IT execs right now compared to the immediate technical and operational hurdles. Yeah, it seems their focus is very much on how do we make this work safely and effectively within our current setup, which leads right into what the report says is critical for actually implementing this stuff successfully. Right. So given those concerns, what did they rank as the absolute must-haves for implementation? Okay, number one, ensure the safety and privacy of using this technology. Can't compromise there. Foundational. Absolutely. Number two, ensure ethical and regulatory compliance. Again, non-negotiable. Number three, seamless integration with existing systems. The big three: safety, compliance, integration. Exactly. Only after those did they list things like training to upskill employees, being able to demonstrate ROI, and getting buy-in from the executive suite. So get the foundations right, the tech, the safety, the rules, before you worry too much about the skills, the money, or the C-suite pitch. That feels very grounded in reality. It really does. It reflects the practicalities of rolling out sophisticated tech in big, complex organizations. And the report digs into specific implementation points that reinforce this. Like what? Like needing stringent measures for data privacy and security, partnering with experienced vendors to handle the complexity, safeguarding decision-making through rigorous testing, and, crucially, keeping a human in the loop. There's the human in the loop again. Always comes back to that. And prioritizing ethical AI, being transparent, tackling bias, having clear accountability. You mentioned orchestration earlier, too, as part of the definition. How important is that piece in actually implementing agentic systems, especially with all these concerns? The report paints orchestration as absolutely vital, especially for governance and for managing risk. It makes a really strong argument for using deterministic technology, predictable tech, like traditional RPA, to orchestrate the probabilistic agents. Okay, unpack that. Why use a deterministic system to manage a probabilistic one? What's the risk otherwise? Right. So deterministic systems like RPA follow strict rules. Input A always leads to output B. Very predictable. Got it. Probabilistic systems, like many AI agents, deal in likelihoods. Their decisions might vary slightly based on inputs or their internal state. Max Ioff from Westcove Distribution put it really well. He said, I expect that RPA will orchestrate the agents. The risk goes up exponentially if a probabilistic AI orchestrates a set of probabilistic agents. Ah, okay, I see. You want the predictable system calling the shots, managing the less predictable one. It provides that layer of control. If you have one probabilistic system telling other probabilistic systems what to do, things could get weird fast. Exactly. The potential for unexpected cascading outcomes just shoots up.
So the report really stresses that agentic automation needs to be designed with that human-in-the-loop capability and the ability to incorporate deterministic decision-making where it counts, layering predictability and governance over the AI's flexibility. Especially for sensitive steps in a process. Okay, so bringing this all home, what's the recommended path forward according to the report? How should companies approach this? It advises a phased approach. Don't try to boil the ocean. Sensible. Start with internal processes, things that are medium scale, lower risk. Use those as a learning ground to integrate agents with existing systems, see how they perform, build confidence. So maybe don't start by automating your main customer-facing service channel on day one. Probably not. Gain that experience incrementally. The report does argue, though, that companies figuring this out early with the early adopters will likely get a significant competitive advantage. Makes sense. And where's the sweet spot? The area with the biggest potential impact for these leaders? It seems to be use cases that really need agents to connect to multiple systems within the enterprise. Back to integration again. Exactly. Collecting data from here, making a decision based on data from there, triggering an action over there, all while operating within that robust enterprise governance and security wrapper. So the most powerful applications are the ones that leverage the agent's ability to work across systems. Right. But those are also the ones that hit hardest against the biggest challenges like integration and security. Precisely. That's where the real power lies, but also where the careful implementation, the orchestration, the human oversight become absolutely critical. It's where the potential meets the enterprise reality. Okay, great summary. So wrapping up this deep dive into the UiPath report summary, we're seeing huge interest accelerating adoption of agentic AI. It's driven by seeing the limits of current Gen AI for end-to-end stuff and the promise of finally automating more complex workflows, getting better oversight, maybe even cracking that integration nut. But yeah, that excitement is definitely balanced by some very real, very significant concerns. Security, cost, integrations are top of mind. And there's this clear consensus that careful orchestration, often using deterministic tools like RPA to manage probabilistic agents and keeping humans firmly in the loop, are absolutely essential for managing the risks. You can't just let them loose. Yeah. The report's big takeaway seems to be that agentic automation isn't just, AI version 3.0. It's framed more as a fundamental expansion of what automation can be, focusing on those dynamic end-to-end processes and combining agents, robots, and people in new, more integrated ways. And just to reiterate one last time, this conversation, it was based on an LLM summary, that report. We've tried to pull out the key stuff, but honestly, the full nuance, the complete picture, the richness of those executive interviews, you really get that best from the source itself. Absolutely. We really, really encourage you. Go read the original 2025 UiPath Agentic AI report. It's thoughtfully done. And this was just our highlights reel, really. Definitely. Yeah. Which kind of leaves us with a final thought for you, the listener. As these agentic AI systems start handling more complex tasks, needing less direct human intervention, step by step, how will our definitions of crucial things like oversight and trust have to change? How do we oversee something that's making more of its own decisions? Good question. And maybe more personally, what new skills might you need to develop to work effectively alongside these increasingly capable, increasingly autonomous systems in whatever field you're in? Something to think about. সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের এই বিশেষ আলোচনায়। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। শুরুতেই একটা জরুরি কথা বলে নিই। আজকের এই আলোচনা এটা আসলে একটা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ, আর সত্যি বলতে এটা একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি। তবে ওই রিপোর্টটা যদি মন দিয়ে পড়েন তাহলে বুঝবেন যে জ্ঞান, সহানুভূতি, মানুষের বোঝাপড়া এগুলো ঠিক অপটিমাইজ করা যায় না। এগুলো আসে অভিজ্ঞতা থেকে, জীবন থেকে। তাই শ্রোতাদের বলছি, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, একটু সময় বের করে UiPath'ের ওই আসল রিপোর্টটা পড়বেন। ওটা পাবলিক ডোমেনেই আছে, লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া রইল। আজ আমরা কথা বলছি UiPath'ের ওই রিপোর্টটা নিয়ে। বিষয় এজেন্টিক AI আর এন্টারপ্রাইজ অটোমেশনের ভবিষ্যৎ। এই রিপোর্টে আমেরিকার 250 জনেরও বেশি IT এক্সিকিউটিভ, মানে যারা $1 বিলিয়ন এর বেশি আয়ের কোম্পানিতে কাজ করেন, তাদের সার্ভে আছে, আর আছেন সিনিয়র টেক লিডাররা। রিপোর্টের লেখক হলেন থমাস ড্যাভেনপোর্ট আর ইয়ান বার্কিন। আমাদের লক্ষ্য হলো বোঝা যে এজেন্টিক AI নিয়ে এত উত্তেজনা কেন, এর সুবিধা কি, ঝুঁকি বা কী, আর কোম্পানিগুলো তৈরি হচ্ছে কিভাবে।
উত্তরদাতায় মনে করেন অন্যান্য বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টিগ্রেশনের অভাব। এটা একটা বড় বাধা। ঠিক তাই। আর প্রায় অর্ধেক মানে ধরুন 49 এটাও মনে করেন যে মানুষের সাহায্য ছাড়া এই টুলগুলো নিজে নিজে শিখতে বা মানিয়ে নিতে পারে না। এটাও একটা চ্যালেঞ্জ। আর এখানে এজেন্টিক এআই এর ব্যাপারটা আসছে। এজেন্টিক এআই? হ্যাঁ, এরা হলো বলতে পারেন এক ধরনের সফটওয়্যার রোবট যারা নতুন এআই ক্ষমতা ব্যবহার করে, যেমন ধরুন টাস্ক প্ল্যানিং বা নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আর এরা মানুষ, অন্য রোবট বা অন্যান্য এজেন্টের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারে। এজেন্টিক এআই, এজেন্টিক ওয়ার্কফ্লোজ, এজেন্টিক অটোমেশন, এই টার্মগুলো তো খুব শোনা যাচ্ছে। একটু সহজ করে যদি বলেন। অবশ্যই। এজেন্টিক এআই তো বললাম। এজেন্টিক ওয়ার্কফ্লোজ হলো এমন কাজের ধারা যেখানে এই এজেন্টরা বেশ স্বাধীনভাবে কাজ করে, সিদ্ধান্ত নেয়, মানে মানুষের নজরদারি খুব কম লাগে। আর এজেন্টিক অটোমেশন হলো মানে এআই, অটোমেশন আর অর্কেস্ট্রেশন, এই সব কিছুর একটা মিশ্রণ। অর্কেস্ট্রেশন মানে হলো বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে একসাথে চালানো আর কি। এটা দিয়ে খুব জটিল কাজও অটোমেট করা যায়। মানুষ, রোবট, এজেন্ট সবার শক্তি একসাথে কাজে লাগানো হয়। বাহ! আর এই এজেন্টিক এআই নিয়ে আগ্রহের যে পরিসংখ্যানটা দিলেন সেটা তো দারুণ। 93% মার্কিন আইটি এক্সিকিউটিভ বলছেন তারা খুব বা অত্যন্ত আগ্রহী। এটা তো প্রায় সবাই। টেকনোলজির দুনিয়ায় এমন একমত হওয়া কিন্তু কম দেখা যায়। তার মানে কি সবাই এখন এর দিকে ঝুঁকছে? আগ্রহ একদম তুঙ্গে, ঠিকই। তবে সবাই যে এখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা নয়। 37%-এর মধ্যেই ব্যবহার বা টেস্টিং শুরু করেছেন, আর 32% ভাবছেন আগামী 6 মাসের মধ্যে ইনভেস্ট করবেন। তবে 90% মনে করেন যে তাদের বিজনেস প্রসেস এজেন্টিক এআই দিয়ে আরও ভালো হতে পারে। সুবিধার দিক থেকে কি দেখছেন তারা? প্রধানত 3টে বিষয়। 1. বিজনেস ওয়ার্কফ্লো ভালো করে মনিটর করা যাবে, 58%। 2. বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন বাড়বে, 53%। আর 3. জটিল বিজনেস ওয়ার্কফ্লো অটোমেট করা যাবে, 52%। এত আগ্রহ, এত সুবিধার কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু চিন্তা বা উদ্বেগও আছে। মানে 93% আগ্রহ একদিকে, ঝুঁকিটাও তো অন্যদিকে ভাবাচ্ছে। ঠিক ধরেছেন। উত্তেজনা যেমন আছে, উদ্বেগও কিন্তু কম নয়। সবচেয়ে বড় চিন্তা হলো আইটি সিকিউরিটি। এটা নিয়ে 56% উত্তরদাতা চিন্তিত। তারপর আছে খরচ, মানে ইমপ্লিমেন্টেশনের খরচ, 37%। আর অবশ্যই পুরনো সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করার ঝুঁকি, 35%। আর মানুষের ভূমিকা, মানে হিউম্যান ওভারসাইট? হ্যাঁ, ওটা খুব জরুরি একটা পয়েন্ট। বিশেষ করে ফিনান্স বা হেলথ কেয়ারের মতো রেগুলেটেড ইন্ডাস্ট্রিতে তো এটা লাগবেই। যেমন ধরুন ইউএসএ এর রামনিক বাজাজ বলেছেন রেগুলেটরি কারণে মানুষের রিভিউ দরকার। আবার ভল্টাস ক্লুয়ারের অভিষেক মিত্তালের মতে বড় অঙ্কের লেনদেনে মানুষের ফাইনাল অ্যাপ্রুভালটা মাস্ট। তাই ওই নিরাপত্তা, গোপনীয়তা আর নিয়মকানুন বা নৈতিকতার দিকটা ঠিক রাখা, এগুলোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে বিরাট সম্ভাবনা, অন্যদিকে বেশ কঠিন ঝুঁকি। একটা ব্যালেন্স রাখার ব্যাপার আর কি। কিন্তু এর মধ্যেও তো কিছু কোম্পানি এগিয়ে আসছে, তাই না? যেমন হ্যাঁ, অবশ্যই। কিছু আর্লি অ্যাডাপ্টার তো আছেই। যেমন ফাইসার্ভ মার্চেন্ট কোড ঠিক করার জন্য এটা ব্যবহার করছে, আর তাতে 99% ক্ষেত্রে মানুষের রিভিউ লাগছে না। এটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার। আবার ধরুন আর্টেরিয়া এআই, ওরা ফিনান্সিয়াল ডকুমেন্ট থেকে ডেটা এক্সট্র্যাক্ট করার মতো কাজে এজেন্টিক ওয়ার্কফ্লোজ ব্যবহার করছে। অ্যান্ডি ফ্যানিং যেমনটা বলছিলেন, এই এজেন্টরা এক্সপার্ট হিসাবেও কাজ করতে পারে, আবার অর্কেস্ট্রেটর হিসেবেও। মানে তারা ঠিক কাজের জন্য ঠিক টুলটা বেছে নিতে পারে, যেমন হয়তো একটা আরপিএ বট। ওহ আচ্ছা, অর্কেস্ট্রেশনের ব্যাপারটা তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ দাঁড়াচ্ছে। অনেকটা মিউজিক কন্ডাক্টরের মতো, যিনি পুরো অর্কেস্ট্রাটা পরিচালনা করেন। বাহ, দারুণ উপমা। একদম তাই। ওয়েস্কো ডিস্ট্রিবিউশনের মাইক ইওফে যেমনটা বলেছেন, আরপিএ এজেন্টদের অর্কেস্ট্রেট করা যায়। এতে পুরো প্রক্রিয়াটা নির্ভরযোগ্য থাকে, কন্ট্রোলে থাকে, বিশেষ করে যখন অনেক এজেন্ট একসাথে কাজ করে। তাই পরামর্শ হলো ধাপে ধাপে এগোনো। মানে প্রথমে কম ঝুঁকির কাজ দিয়ে শুরু করা, ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা বাড়ানো। আসল লক্ষ্য হলো মানুষ, রোবট আর এজেন্টের মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এফিসিয়েন্সি বাড়ানো। তাহলে সব মিলিয়ে যা বোঝা গেল, এজেন্টিক এআই কিন্তু একটা বড় সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
এআই, অটোমেশন আর মানুষ, এই তিনের সমন্বয়ে আরও ব্যাপক অটোমেশন আর কর্মদক্ষতার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এটাকে সফল করতে হলে ওই নিরাপত্তা, ইন্টিগ্রেশন, খরচ আর নৈতিকতার দিকগুলো খুব সাবধানে সামলাতে হবে। একদম ঠিক। আর ওই রিপোর্টটা ভবিষ্যতের একটা ছবিও দেখাচ্ছে, যেখানে বলা হচ্ছে একজন কর্মী হয়তো অনেকের কাজ করে ফেলতে পারবে। এটা কিন্তু আমাদের একটা গভীর চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়। মানে শুধু এফিসিয়েন্সি বাড়ার বাইরে বিভিন্ন কাজের রোল বা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এই বদলের আসল মানেটা কি হতে পারে? এটা কি শুধু কাজের চাপ বাড়াবে, নাকি আমাদের কাজের ধরন বা হয়তো সামাজিক কাঠামোতে আরও বড় কোনো পরিবর্তন আনবে? সত্যিই ভাবনার বিষয়। আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই বিষয়ে আরও গভীরে জানতে হলে UiPathের সম্পূর্ণ রিপোর্টটা অবশ্যই পড়বেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। नमस्कार, वीकेंड हसलर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पाब्लो। और मैं हूं निकिता। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक जरूरी बात। ये चर्चा UiPath की मूल रिपोर्ट का सिर्फ एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM से तैयार किया गया सारांश है। गहराई से पढ़ने पर यह साफ होता है कि ज्ञान, सहानुभूति और मानवीय समझ को आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उन्हें जीना पड़ता है। तो हमारी गुजारिश है, आप ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज थोड़ा समय निकालकर ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी UiPath की इस बेहतरीन ओरिजिनल रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम UiPath के 2025 की एजेंटिक AI रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये रिपोर्ट काफी ठोस आधार पर बनी है। मतलब $1 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू वाली कंपनियों के 250 से ज्यादा अमेरिकी IT अधिकारियों का सर्वे है इसमें। और सीनियर टेक्नोलॉजी लीडर्स के इंटरव्यूज भी शामिल हैं। बिल्कुल। और इसका मकसद है एजेंटिक AI को लेकर जागरूकता, दिलचस्पी और तैयारी का लेवल समझना। ऐसा लगता है कि एंटरप्राइज AI, खासकर जनरेटिव AI जिसे हम जेन आई कहते हैं, वो एक मोड़ पर आ गया है। हाँ, मांग तो बहुत बड़ी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन शायद अकेले जेन AI की जो वैल्यू है वो थोड़ी ठहर सी गई है। मतलब कुछ सीमाएं हैं, जैसे दूसरे बिजनेस एप्स के साथ इंटीग्रेशन में दिक्कतें। सही कहा। गवर्नेंस और सुरक्षा के मुद्दे भी हैं। और यहीं पर शायद एजेंटिक युग की बात आती है। बिल्कुल, जहां AI, एजेंट, ऑटोमेशन और इंसान, ये तीनों मिलकर ज्यादा जटिल, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑटोनॉमस काम करेंगे। अच्छा, तो ये एजेंट क्या चीज है असल में? देखिए, ये सॉफ्टवेयर रोबोट की तरह है, पर इनमें नए AI स्किल्स हैं। ये ज्यादा मुश्किल काम कर सकते हैं, जैसे खुद ही प्लान बनाना, फैसले लेना। ओके। और ये पर्दे के पीछे काम करते हैं, इंसानों के साथ, दूसरे रोबोट्स और यहाँ तक कि दूसरे एजेंट्स के साथ मिलकर। और एजेंटिक वर्कफ्लो? वो ऐसे प्रोसेस वर्कफ्लो हैं जो इन एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और एजेंटिक ऑटोमेशन हुआ AI, ऑटोमेशन और प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन का मेल। इसका मकसद है जटिल प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करना, वो भी बहुत कम इंसानी दखल के साथ। रिपोर्ट तो कहती है कि इसमें दिलचस्पी जबरदस्त है। हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 93% अमेरिकी IT अधिकारी कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा या काफी रुचि रखते हैं। और कमाल ये है कि 37% कह रहे हैं कि वो इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी हाँ, पहले से ही। ये काफी तेज अडॉप्शन दिखाता है। बिल्कुल। और 90% मानते हैं कि उनके पास ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें एजेंटिक AI बेहतर बना सकता है। फायदे क्या देख रहे हैं वो? सबसे ऊपर है बिजनेस वर्कफ्लो की बेहतर निगरानी, करीब 58%। फिर है एप्स के बीच बेहतर इंटीग्रेशन, 53%। और जटिल बिजनेस वर्कफ्लोज का ऑटोमेशन, वो भी 52% पर। अगर अभी के AI इस्तेमाल को देखें तो IT प्रोसेस ऑटोमेशन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, 90%। अच्छा। उसके बाद जेनाए और LLMs आते हैं, 79%। और फिर पारंपरिक मशीन लर्निंग, 75%। और कामयाबी कैसे माप रहे हैं? मुख्य रूप से प्रक्रिया की एफिशिएंसी में सुधार, 67%, लागत में कमी, 63%। और ROI यानी निवेश पर रिटर्न, 59%। हाँ, और IT लीडर्स संतुष्ट भी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है 72% और सटीकता भी बेहतर हुई है, 69%। लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी हैं। हाँ बिल्कुल, मौजूदा AI की दिक्कतें साफ हैं। सबसे बड़ी है दूसरे बिजनेस एप्स के साथ इंटीग्रेशन की कमी, 61% लोग ये मानते हैं। और ये कि वो बिना इंसानी मदद के खुद से सीख और ढल नहीं पाते,
ये 49% लोगों की चिंता है। और गलत नतीजे देना, जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं, वो भी एक मुद्दा है, 31%। खासकर जेनाई और एलएलएम्स के साथ। हाँ, वहाँ चिंताएं डेटा क्वालिटी को लेकर हैं, 47%, आईटी सुरक्षा के जोखिम 33%, और ये कि नतीजों को समझना मुश्किल है, 31%। तो यहीं एजेंटिक एआई की भूमिका आती है। एग्जैक्टली। ये पारंपरिक एआई की इन्हीं सीमाओं को, इन्हीं दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करता है। ये अलग अलग एआई तकनीकों को मिलाता है, ऐसे एजेंट बनाता है जो खुद सीख सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, फैसले ले सकें। इसमें आरपीए, एलएलएम्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये सब आ जाते हैं। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि 87% उत्तरदाता मानते हैं कि इन अलग अलग एआई तकनीकों का आपस में मिलकर काम करना, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी, बहुत जरूरी है। एक उदाहरण दिया गया है फाइजर का, वो काफी दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, वो फिनटेक कंपनी है। उन्होंने एक एजेंटिक यूज केस बनाया है जो कंपनियों को मर्चेंट कोड असाइन करता है। और कहते हैं 99% से ज्यादा बार मानवीय वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, लेकिन हाँ, इसे बनाने में मेहनत बहुत लगी है, ये भी सच है। Optura.ai के एंडी फैनिंग का नजरिया भी है इसमें। वो एजेंट्स को एक्सपर्ट और ऑर्केस्ट्रेटर की तरह देखते हैं। सही कहा, जो ये तय करते हैं कि किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लेकिन फिर वही बात, चिंताएं भी हैं। हाँ, वो तो है। सबसे बड़ी चिंता आईटी सुरक्षा की है, 56%। फिर लागत 37% और मौजूदा सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन 35%। रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में नियमों का पालन यानी कंप्लायंस, वो भी 35% पर है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और मानवीय निगरानी का सवाल, वो बहुत अहम है। कई लीडर्स जैसे यूएसए के रामनिक बजाज और वॉल्टर्स क्लीवर के अभिषेक मित्तल, उन्होंने जोर दिया है इस पर कि रेगुलेटेड कामों या जहां बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, वहां इंसानी रिव्यू जरूरी रहेगा। एंडी फैनिंग ने भी कहा कि भरोसा बनाने के लिए सेफ्टी गार्ड्स, मतलब सुरक्षा उपाय, जरूरी हैं। तो इसे ठीक से लागू करने के लिए क्या जरूरी है? कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना। दूसरा, नैतिक और नियमों का पालन। और तीसरा, मौजूदा सिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेशन। वेस्को डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्स ईओफ ने ऑर्केस्ट्रेशन के महत्व पर जोर दिया है। अच्छा। हाँ, उनका मानना है कि आरपीए एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करेगा ताकि जोखिम को मैनेज किया जा सके। ये काफी प्रैक्टिकल सोच है। तो कुल मिलाकर क्या समझे इससे? देखिए, एजेंटिक एआई ऑटोमेशन में एक बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। ये एआई ऑटोमेशन और इंसानी सहयोग को जोड़ता है ताकि मुश्किल एंड टू एंड प्रक्रियाओं को संभाला जा सके। फायदे बहुत हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा, नैतिकता, इंटीग्रेशन और हाँ, मानवीय निगरानी पर बहुत सावधानी से ध्यान देना होगा। तो शायद धीरे धीरे आगे बढ़ना सही रहेगा, कम जोखिम वाली प्रक्रियाओं से शुरुआत करना। बिल्कुल, एक चरणबद्ध तरीका ही समझदारी भरा लगता है। हाँ, क्योंकि दिलचस्पी तो बहुत है और कुछ लोग इसे अपना भी चुके हैं। लेकिन आईटी नेताओं के सामने असली चिंताएं हैं सुरक्षा, लागत, इंटीग्रेशन। और ये बात बार बार सामने आ रही है कि इंसान की भूमिका, ह्यूमन इन द लूप, जरूरी रहेगी, खासकर जरूरी या रेगुलेटेड कामों में। ऑर्केस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जैसे जैसे ये एजेंटिक सिस्टम ज्यादा काबिल होते जाएंगे, तो ये जो ऑटोनोमस एआई एजेंट्स हैं और जो जरूरी मानवीय निगरानी है, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ गलतियों के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। और दूसरा सवाल, इस नए एजेंटिक युग में हमारे वर्कफोर्स के लिए, मतलब काम करने वाले लोगों के लिए, कौन से नए स्किल सबसे जरूरी हो जाएंगे? सोचने वाली बात है। शायद अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और एआई के साथ मिलकर काम करने की क्षमता। ये भविष्य के लिए बड़े सवाल हैं। सुनते रहिए वीकेंड हसलर्स।